नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लस संगत अनिल सेठ अंकल जी उपस्थित हैं। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सीमा गिल आंटी। हम दोनों अनिल सेठ अंकल जी से ब्लस शब्द टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उनके भाव जानेंगे। जय गुरुजी अनिल सेठ अंकल। जय गुरु जी अंकल एंड जय गुरु जी सीमा आंटी। जय गुरुजी सीमा आंटी। गुरु अंकल जी। बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आपको रूबरू देख के, और गुरु संगत के लिए ब्लेस शब्द के ऊपर आपसे बात करेंगे। अंकल, द जनरल कंसेंसस विद इन गुरु जी संगत इज दैट 2 hours ऑफ सत्संग is enough in time to meditate. I'll again repeat, the general consensus within Guruji's Sangat is that 2 hours of satsang is time to meditate or connect with Guruji, be it through bhajans, shabad, kirtan or blessed shabads from Gurbani. What are your bhavs? Do you differ from this mindset? Okay, Jai Guruji everyone, and thank you Guruji, Shukrana Guruji for giving me this opportunity once again. Uncle, this thing about Shabads has been in the news for quite some time now. Let us understand, technically, I have said on many occasions earlier कि जिन्ने भी शब्द हैगे ने ना, all these shabads are penned by the Sikh Gurus, starting from Guru Nanak Ji and ending at Guru Gobind Singh. So all the shabads are blessed. There is nothing called a shabad which is not blessed by the Guruji. But what Guruji used to play, we need to understand that, because that is a prescription for us. ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ the doctor examines us and prescribes some medicines for us. When we go with this prescription, we don't go and buy the pharmacy, we don't go and buy the chemist medicines. We only buy the medicine which has been prescribed for us. So let us understand the difference between the blessed shabads and Guruji's prescribed shabads. Guruji ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। He used to say, मैं वड्डा मंदिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। I have infused the बड़ा मंदिर with special powers of all the ज्योतिर्लिंग्स। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੰਵਰ ਜਾਣਗੇ। Similarly used to say, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ, Guruji used to say that he has infused these shabads with special powers, special blessings, ताकि जिन्नी वार संगत है शब्दां ਨੂੰ ਸੁਨੇ, ਉਨੀ ਵਾਰ not only ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਮਰਪਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ. Now, these days when I see Sangat invites, I find Shukrana songs are there and other shabads are there. I have nothing against that. But remember, गुरु जी एक बड़ा यूनिक शब्द है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुहाडे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे. What is the meaning of तुम्हारे लेखे here? Okay, the Bhagavad Gita was there, the Ramayana was there, the Mahabharata is there, Guru Granth Sahib is there, the Bible is there, the Quran is there. All these scriptures have been there for a very, very long time. But if these scriptures could deliver, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਚੜ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. He has come only because of his love and care for his sangat. So he has shown us the right path. But if we choose, Guruji used to say, you are strong enough to stand and free to fall. Now what do we want to do? Do we want to stand or do we want to fall? ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਏ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਜੋ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ.
Sadly, Sangat भीड़ बनती जा रही है. Because if we don't follow Guruji's vachans, we don't follow his directives and instructions, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ used to say ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ because you don't require brains, you don't require intelligence to proceed on the spiritual path. You require the Guru's guidance. He will show you where the pitfalls are. He will tell you how to navigate. He has shown a very simple path. 50 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ 50 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ I find so many different scriptures, the inclusion in our satsang. I went to a satsang the other day and there was a Qawwali being played over there. There was Hanuman Chalisa being played there and the Aarti was performed. Mata, Vaishno Mata, the Aarti and then Guruji's Aarti. Point is, if you feel that you cannot surrender to Guruji 100%, don't surrender, no issues. Guruji ने कभी compulsion थोड़ी की है. But when you say कि मैं जी Chinese restaurant जाऊंगी तो उत्थे मैं डोसा खाने ते doesn't make sense. ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ we become argumentative we take pride in discussing and what do we discuss? We discuss, well, anything and everything under the sun, but we don't want to discuss obedience to the Guru's laws. ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ anybody who wants to get ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ in his residence ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ कोई संगत रोटी बना के लाएगी कोई संगत दाल लाएगी कोई सब्जी लाएगी कोई सैलड लाएगी कोई हलवा ले आएगा you have to do nothing and जद गुरुजी चोले विच सन वो डांस करांदे सन and his dance used to be where he used to perform x-ray on each person performing the dance. I was aghast. I said it was such a sad sight to see such announcements being made. But then this is what it has come to. Because if we don't follow Guruji's vachans, most important thing over here is कि अगर सानू भगवत गीता तो ज्ञान मिल जांदा guidance मिल जांदी ते we would have ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ एनवायरमेंट का विषय नहीं हैगा डांस का विषय नहीं हैगा पार्टी का विषय नहीं हैगा सत्संग विषय हैगा ज्ञान का भगती का समर्पण का त्याग का गुरु ਨੂੰ फॉलो ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ you have to be 100% obedient to the guru's laws. Very right. Uncle, I place regard in your comments, but I have a question for you. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ. So by those means, would you regard that Shabad Gurbani would impart positive vibration to Sangat regardless? Let me comment on that. When Guruji said that, I was part of that satsang on that particular day when two ladies were seen gossiping during the satsang. Gestured to the Sevadar uncle to, get these ladies to quiet down. So uncle went and he told them, satsang is going on, so please don't talk. But they kept on, only the intensity of their talk probably reduced, but they were still, gesticulating amongst themselves. At a couple of times, Guruji gestured to the Sevadar uncle again to,
make them fall in line with the discipline. But somehow it did not happen that way. So when these aunties, after the satsang was over, after the langar was over, when Sangat used to go and seek Guruji's blessings to go home, when these aunties went, Guruji talked to one of the aunties and he said, Auntie, की गल तू 2 घंटे चुपचाप नहीं बैठ सकती? तू 2 घंटे शब्द नहीं सुन सकती? She said, Guruji, शब्द समझ नहीं आते. Then he said, ਲੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ. ਆਂਟੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਰਾਗੀ ਮੇਰੇ ਬਲੈਸਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕਟਣਗੇ. You know, it is important to understand over here that Guruji ने हमें जब बोला है कि मैं 90% ਤੁਹਾਨੂੰ bless ਤੁਹਾਡੇ, Guruji never said कि मैं ਤੁਹਾਡੇ 90% ਪਾਪ ਕੱਟਦੇ ਨੇ. He said 90% ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਨੇ. Because paap and punya, they are two separate pages of our ledger. You can't do one paap and then say, I will do one punya to wipe out that paap. It doesn't happen like that. Maybe in social terms, you invite me for dinner, fine, and then I reciprocate and I invite you for dinner. Socially, this is the norm. But in spirituality, this is not the norm. Each paap has its own after effects and each punya has its own after effects. Which means एक लोहे दी जंजीर हैगी है, एक सोने दी जंजीर हैगी, but जंजीरां दोनों हैगियां ने. And until you arrive at a point where your paap and punya account is at 0, you are not ripe enough for gati. Because Guruji कोल जो बंदा Guruji को नहीं जानता ना, वो भी bless हो जाता है. But then Guruji, you know, he told us that there are so many laws in motion. There is the law of your karma, your past karma, present karma, prarabdha and present karma. There is the law of dua, what your elders and your parents have, you know, blessed you with. There is the law of your desires and the intensity of your desires. All these keep shaping and reshaping our destiny. But the most important law is the law of the Guru. Because Guru can write and rewrite your destiny. So Guru Gobind दोनों खड़े किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए. It is important to fall in line with the Guru's vachans, Guru's directives, because they are not mass specific. They are Sangat specific. Guruji once told a lady having a diabetic count of 460 plus while fasting, he said, 1 kilo jalebi kha le. And that was meant for her. It is not meant for every diabetic to go and have jalebi. So we must understand कि गुरुजी ने जो हमें डायरेक्ट कहा है, और to ensure कि ਅਸੀਂ 100% ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀ, ਗਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ. ਅਦਰਵਾइज ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ. ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਭਰੋਗੇ. That is, Guruji has no complaints against that. You may take one birth to reach him and you may take hundreds of births to reach him. He has no issues with that. Because I have a question for you. I do have a question for you. Since a vast majority of the Sangat, they aren't really able to comprehend the deep meaning of Gurbani. So why then is it important to just listen to blessed Shabads? The point here is not that. You have to understand, when you put a child to school, he has to go the drills for 12 years before he can be, you know, termed as partly educated. He will grow. He will learn. Point is that the Guru has prescribed something for you. It's a lesson. It's like I ask you to, you know, perspire and do some exercise so that your muscle strength builds up. But when we start questioning, I think then there is a huge problem, because questioning leads to some kind of a non-acceptance of the doctrine that has been advised to us. Gurbani is not difficult to understand. I can understand that the language may be a little difficult. But if Guruji has said that, you have to have enough faith in him that he is not a normal human being. He only looks like a normal human being. That is what Avatar is all about. He takes a human form so that you can approach him, so that you can touch him, so that you can speak with him. And then suddenly he rises to superhuman heights
to make you understand that he is not ordinary, he is divine. When he says something, even the nature has to fall in line. I mean, there can be no disagreement to what he ordains. He has said it on so many occasions कि गुरु दे वचन पत्थर दी लकीर है. Now, my point here is, you need to identify, you need to answer this question yourself. Were you better off prior to meeting Guruji, or are you better off after meeting Guruji? You see, I may accept Guruji as Guruji, I may accept him as God, I may accept him as a normal human being. The point is that he is not normal. I need him more. He doesn't need me. 100 Anil Seths, 1,000 Anil Seths, 1,000,000 Anil Seths cannot join together and make one Guruji. Whereas one Guruji can make millions and millions of Anil Seths. So I am incomplete without him. I need him. He's a source of strength. He's a source of hope. He's a source of belief. He's a source of knowledge. He's a source. I mean, you need to understand. I recall an incident when he asked somebody, "Hey, auntie, tu sab to zyada kinnu pyar karni hai?" Now you imagine that this is a question being shot at you, or 10 sangat sitting before me. Somebody will say, "I love my husband." Somebody will say, "I love my father, my mother, my daughter, my son," etc., etc., etc. 10 people may have 10 variable answers. The second question was, "Tanu sab to zyada kaun pyar karta hai?" Again, this may have 10 variable answers. But then Guruji said, "Okay, तू तेरा हस्बैंड तनु सब तो ज्यादा प्यार करता है?" हाँ जी गुरुजी. तेरा साथ कितने तक निभाएगा? Now, this is a point where people get stuck because they're not prepared for this answer, they're not prepared for this question. And then Guruji would say, he would ask the question and then he would give the answer. Auntie, तेरा पति या तू अपने पति ਨੂੰ सिर्फ शमशान घाट तक साथ दे सकनी है, उस ते अगे ते नहीं जा सकती ना? हाँ जी गुरुजी. Then Guruji said, उस तो अगे मैं जा सकना. And then he added to that, सिर्फ मैं जा सकना. Now this is the master जिसकी संगत में आप बैठे हो. आप किस पे विश्वास कर सकते हो दुनिया में? 100% विश्वास तो भगवान पे ही कर सकते हो, गुरु पे ही कर सकते हो, और तो कोई है नहीं. ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. So he is the he is the everlasting eternal hope, eternal solution for any kind of a problem anywhere in this cosmos. Point is this. And what is he asking from you? Is he asking you to give your riches to him, surrender your riches to him? No. Is he asking you to take, to संसार त्याग के पहाड़ां ते चले जाओ? The answer again is no. He is not asking anything. He is not even asking you to pray. He said कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, because ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ. I know everything. When you come to me, split second, I know your existence from the time of your evolution. We cannot even comprehend कि एक सेकंड में कैसे इंसान को कोई चीज मालूम हो सकती है. बट देन वो इंसान नहीं है ना, वो गुरु है, वो भगवान है. We must understand, we must keep this in mind. With our limited mental resources, we are trying to judge the unending, eternal. It is not possible. अपने बच्चों को तो हम समझ नहीं पाते, गुरु को समझने चले हैं, भगवान को समझने चले हैं. So I think Satsangat should be counseled, and if they don't heed counseling, Guruji said, ignore. Because we all have our own journey, and which only we can undertake. Nobody else can do this journey on our behalf. Only we have to do it. And I would like to just say here कि हम तो अभी पहली सीढ़ी पे उलझ गए हैं. कौन से शब्द लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए? अरे भाई, उससे आगे भी तो निकलो.
गुरुजी ने बोला था आप अटके रहते हो क्योंकि आप एबीसी में उलझे हुए हो। यू अब्यूज पीपल, यू एक्यूज पीपल, यू ब्लेम पीपल, यू क्रिटिसाइज पीपल, यू कर्स पीपल। आप इससे बाहर ही नहीं निकलते हो। आप सत्संग में आते हो, गुरुजी कहते थे मैं आपको साफ करके चमका के भेजता हूं, आप 2 दिन बाद फिर वैसे ही गंदे होके आ जाते हो, बिकॉज यू हैव नॉट ट्रांसेंडेड द एबीसी। एंड ही वुड से एबीसी के बाद आएगा डी, डी फॉर ड्यूटी, डी फॉर डिसिप्लिन, डी फॉर डिवोशन। डिवोशन तो बहुत बाद में है, पहले ड्यूटी तो समझ लो, डिसिप्लिन समझ लो। डिसिप्लिन पे ही हम अटक जाते हैं, करेक्ट। क्योंकि हम लोग ना यू नो कुत्ते दी धूम जल जाती है लेकिन सिद्धि नहीं होती। ओल्ड प्रोवर्ब, a dog's tail, even when it's burnt, it doesn't lose its shape. That tedapam, that golai still remains like that. And these are the things which we have to imbibe in our life. And then अभी तो पहली सीढ़ी पे अटके हुए हैं, अभी 5 और कवर करनी है। आप अगर अपनी यात्रा स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा पिटफॉल्स कहाँ पे हैं? Then Guruji said you come to COD. मेरे लिए I sort of this is my own personal abbreviation. Cash on delivery doesn't mean cash on delivery. It means sealing on desires. हम तो अभी भी इच्छाओं पे अटके हुए हैं। संगत तो अरदास करती है, शुक्राने करती है, अमृत वेले। आई गेट अबाउट 15 to 20 playlists every day, and believe me, most of these just need to be discarded right away, because people have cleverly manipulated and inserted songs of their liking which are not meant to be there in the satsang at all. Because गुरुजी कहते थे सत्संग में जब आप जाते हो अपनी सुनाने नहीं जाते, गुरु की सुनने जाते हैं। अपनी सुनाने के लिए आपके पास अमृत वेला है, अरदास में करो, अमृत वेला में उठो, अरदास करो, मैं सुनूंगा। जब सत्संग में आते हो तो गुरु की सुनने के लिए आते हो। वहां ये नहीं होता कि मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी दया करो। नो, अरदास गुरुजी तो कहते थे जिसके घर में चले जाऊं उसको तो पूरा जन्म, पूरा जीवन पाठ करने की भी जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात गुरुजी ने कही है। जब आप मेरे शरण में आ जाते हो, आपको शिवलिंग पे दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शिवलिंग पे जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। कितनी चीजों से उन्होंने मुक्त कर दिया है हमको ऑलरेडी। फिर हम उनको क्वेश्चन करें तो बड़ी शर्म की बात है। दुर्भाग्य है हमारा। हमें अपने भाग्यों को चमकाना है, उसको सौभाग्य में कन्वर्ट करना है, दुर्भाग्य में नहीं। नहीं तो बहुत जन्म बिछड़े थे माँ, तो एक और सही, one more janam also. Let this journey get extended by another birth. Depends on you what your goal is. If you want to get liberated, Guruji said कि कृपा ते उन्हां ते भी हो जाती है जो मेरे को नहीं आंदे, लेकिन जो मेरे को आंदे ने ना उन्हां दा गति दा मार्ग खुल जाता है। Uncle, I recall, auntie, I know you have questions, but I recall an incident when the satsang was being held in Empire Estate, and the place was packed. Packed means there was not even place enough for anyone to stand. So one uncle, he came in a bit late, and when he came in, the chai prasad was being served. So during in his haste to touch Guruji's feet and then to find place for himself to sit, he collided with the uncle who was carrying the tray of glasses with hot tea. Oh. And this tray and all these glasses fell on this uncle. This uncle's legs and feet were badly burnt. Now imagine hot tea which you are not able to sip, and you need to blow into the glass to even sip it. If it falls on your naked feet, how it is going to impact you? But this uncle did nothing. He didn't say anything. He just, wherever he could find place for himself, he just went and sat down. Now, after the satsang was over, when this uncle came to seek Guruji's blessings for going home, Guruji asked him, Uncle, aaj ki hoya? Uncle just stood there with folded hands. He had nothing to say. Then Guruji said, Uncle, aaj pata hai tenu ki hoya? He said, nahi Guruji. अंकल आज तेरे पिछले 19 जन्मां दे कर्म स्वाहा हो गए ने। 19 births
karams of 19 births swaha ho gaye. Wow. And Guruji said, uncle, agar tu uf kar denda na, te gal bigad gayi sigi. तो चुपचाप गुरु जी के ये एक वचन है गुरु जी का, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੱਟ ਲਓ. But if we continue to question, if we continue to seek answers, then I think we are more intelligent than Guruji. That's what it implies. कि हमको अगर गुरुजी के लर्नेड मास्टर, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग मास्टर, उनकी बातों पे भी यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर हम कहाँ विश्वास करेंगे? फिर तो हमारी ये दुर्गति है ना, दुर्भाग्य है कि हम ऐसा गुरु मिलने के बाद भी हमें उन पे अटूट विश्वास नहीं हुआ. This is unfortunate. But otherwise, well, I'm ready for your question, Auntie. You were saying something and I stopped you in between. No problem, Uncle. Jai Guruji, Shukrana. I was just, I was quite in awe. Aapne mentioned kiya when you were talking about the two ladies in the mandir where Guruji stopped them and said, "Ke e mere blessed ragi ne." So my question was pertaining to that, ke blessed ragis jede ne, una de Guruji de chola chhaddan to baad de jede shabad ne, are they automatically blessed because they were? No. You must understand. I recall, Guruji Shabads se jab hum jud gaye, then naturally, you get, you have a roving eye for Shabads after that. So we've listened to Shabads which were being played in Shatabdi Express, Delhi, Amritsar Shatabdi. And then I spoke to the train guard and I wanted a list of those Shabads and he showed me the CD which they were playing. So I went and bought that CD. And during my next visit to Empire Estate, I gave that CD to Raghuveer uncle, who was in charge of playing the Shabads. And I told uncle, I said, uncle, बहुत अच्छे शब्द हैं इसमें, आशा भोसले के हैं, लता मंगेशकर के हैं, मोहम्मद रफ़ी के हैं, तो हमको तो बहुत अच्छे लगे. So we thought, why not the whole satsang and the sangat also be blessed with these shabads. तो अंकल ने वो CD रख लिया. He didn't say anything. And we were, we used to go to गुरुजी 365 दिन में से 360 दिन तो हम जाते थे वहां पे. और मैंने देखा कि 15-20 दिन हो गए और वो CD तो उन्होंने प्ले नहीं किया. And I asked him again, I said, uncle, anything wrong with that CD? He said, nahi uncle, CD नाल कोई problem नहीं, शब्द नाल भी कोई problem नहीं. The point is that Guruji approves certain shabads. Now to the common man and even to Raghuveer uncle, he said, Guruji ना हर शब्द को 6-6, 10-10 बार सुनते हैं. तो I just thought to myself, जो गुरु अपनी संगत को एक नजर में पहचान जाता है, वो शब्द 6-6, 10-10 बार क्यों सुनेगा? And the answer came from Guruji. He said, I have blessed the Bada Mandir with the powers of all the Jyotirlings. And I have also blessed the Shabads which are played here with my special powers. Now, those Shabads, about 50 of them I recall, maybe 2-3 उसमें भजन भी हैं. These Shabads is what one refers to, not those Ragis alone. I mean, everything that the Ragi has sung may not be blessed, but the ones which were blessed are the ones which were played over there. And at times, the same Shabad would be played even 2 times or 3 times during the satsang, maybe for the benefit of Sangat. So don't look at each Shabad and each Ragi. Let's say Harbans Singh Ragi, Jagadri wale, उनकी काफी सारे शब्द वहां बजते थे. But I also know on one occasion when उनका एक almost 1 घंटे की ड्यूरेशन वाला शब्द है, वो जैसे ही बजा था, स्टार्ट हुआ था, गुरुजी ने तुरंत बंद करवा दिया था.
तो बट देन आई डोंट लुक एट इट दिस वे कि गुरुजी के वहां क्या चलता था क्या नहीं चलता था। आपको जो शब्द अच्छा लगता है आप उसको सुनो, लेकिन सत्संग में क्या बजाना है उसके लिए तो गुरुजी की मर्यादा का फॉलो करना पड़ेगा ना। बाकी घर में आपने जोन से शब्द सुनने हैं सुनो। यू वांट टू एंजॉय एक्स वाई जेड शब्द, प्लीज गो अहेड एंड एंजॉय। बट फॉर सत्संग like गुरुजी सेड ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, गुरु ਨੂੰ सुनान नहीं जानते। एंड गुरुजी सरमन्स नहीं देते थे, उनके जितने सरमन्स हैं जितने मैसेजेस हैं जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बोलते थे ए शब्द दे थ्रू मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जीन दी कला सिखाना, हाउ टू लिव लाइफ, द आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर अफेयर्स। सो दैट इज व्हाट आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, I have my shortcoming, my feelings, but then this is what I have understood during my journey with Guruji. Am I clear, Auntie? Absolutely, Uncle. You've answered this question very well. Thank you so much. जय गुरु जी। अंकल जय मैं गुरु जी। अंकल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ पिछले 6 महीने से। गुरुपुरब वाले दिन यहाँ एक रिंगवुड मंदिर है। गुरुपुरब वाले दिन मुझे उन्होंने वहाँ बुलाया, संगत के साथ मैं वहाँ गया, तो उन्होंने ब्लेस शब्द नहीं चलाए थे उस दिन। उन्होंने रिंकू वीर जी की व्याख्या जो होती है लंबे वाली वो चला दी थी सिर्फ। 1 हाँ घंटा जी, व्याख्या के बाद में हम खली प्रसाद लेके आ गए। तो मैं उस हाँ दिन जी। इतना मायूस हुआ कि मतलब ब्लेस शब्द वहाँ चलने चाहिए थे। हम सब गुरुजी ने कनेक्ट किया हुआ है। तो फिर वो मेरी उनके ट्रस्टी से बात हुई कि मैंने उनको बोला कि अंकल ये जो ब्लेस शब्द आपको यहाँ चलाने चाहिए थे, आज तो संगत भी इकट्ठी है, गुरुपर्व भी है, प्रकाश दिवस है, तो आपने ये रिंकू वीर जी वाली जो व्याख्या चला दी है, तो ये तो ना बड़ा मंदिर चलाता आज तक, ना कभी ब्लेस शब्द ने कभी सुनी है किसी ने। तो उनमें से एक ने बोला, ट्रस्टी ने मेरे को, कि उस टाइम रिंकू वीर जी नहीं थे ना, तो क्या ये गुरबाणी नहीं है? कहते हैं कि उस टाइम रिंकू विजन नहीं थे, तो क्या ये इसको हम गुरबानी नहीं कहेंगे? मैं बोला बात आपकी ठीक है कि उस टाइम रिंकू विजन नहीं थे, लेकिन हमको ब्लेस शब्द तो महाराज दे के गए हैं, हम ब्लेस शब्द क्यों ना सुने? ब्लेस रागी भी हैं, नहीं, ब्लेस मेरा आंसर बड़ा सिंपल है इसमें। रिंकू वीर जी इज अ वेरी नोबल सोल। हमारा प्रणाम है उनको। एंड द पॉइंट इज ओवर हियर इज दिस, सी रिंकू वीर जी को अगर आप सुनते हैं बड़े मतलब ही इज ऑल्सो सेइंग समथिंग वेरी नोबल एंड वेरी प्रोफाउंड एंड ही इज कोटिंग फ्रॉम गुरुबाणी। बट माई आंसर टू योर क्वेश्चन कि गुरबाणी एंड गुरु ग्रंथ साहब वर देयर इवन बिफोर गुरु जी केम इनटू दिस वर्ल्ड। फिर गुरु जी को अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज गुरबाणी ग्रंथ साहब वर परहैप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम inadequate to deliver the misguided souls who are in the world today. Rinku Virji stresses so much on Amrit Vela. He says Amrit Vela starts at 12 midnight and goes on till 6 o'clock in the morning. Technically, Amrit Vela starts, अगर आप scriptures पे जाते हैं, Amrit Vela starts 2 hours before sunrise and finishes at sunrise. But Guruji ने जो अमृत वेला को डिफाइन किया है, ये तो मेरे साथ एक आंटी अंकल बैठे थे, तो आंटी सो गई थी शायद सत्संग में, तो गुरुजी ने बोला आंटी की गल तू राती सौंदी नहीं? तो उनका हस्बैंड बोले गुरुजी ये सवेरे 3 बजे उठ जाती है। तो गुरुजी सेड वेरी गुड, ते की करनी है उठ के 3 बजे? तो आंटी ने जवाब नहीं दिया, हस्बैंड ने तो बोला गुरुजी जाके स्नान कर दिए, ਉਹਦੇ बाद 4 बजे पूजा पाठ करन बह जाती है। अच्छा वेरी गुड, तो ਉਹਦੇ बाद की करनी है? She had no answer. तो गुरुजी said आंटी चंगा है गया, जल्दी उठनी है, बहुत चंगा करनी है, लेकिन अमृत वेला वो टाइम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ when you are connected with me। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ 4 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ 4 ਵਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ और ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 8 ਵਜੇ ਹੈਗਾ। whenever you connect with me is your amrit vela, and amrit vela guruji defined कि there is one amrit vela which is called brahma muhurat, where nature is at its peak, maximum oxygen in the environment,
all angels and fairies, etc., all on their, rounds in the morning. And the other Amrit Vela is when you are connected with Guruji. Very right. Guruji said, your ardas, your shukrana is not to be sung in shabads and in satsangs. It is a personal sadhana of yours. And then he also went on to say ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੌਫੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਮੰਗੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿਕਲੇਟ ਮੰਗੋਗੇ ਚੁਇੰਗਮ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਡਸਨਟ ਰੀਚ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਚ ਉਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ get out of it? I am here to deliver you from that, but you don't want to get deliverance from that. And you are made strong enough to stand, free to fall. You want to fall, go ahead and fall. Who's stopping you from falling? So then the point is, hey, I've stopped going to many satsang because they are not satsangs anymore. Very right. You have a samosa and a gulab jamun being served with chai prasad. Then you have parathas and you have paneer and you have raita and you have sabzi and you have salad and you have pickle and you have halwa. And then you have sevadars going around with potfuls of more of these ingredients, more of these dishes, extra chapatis, extra paneer, etc., etc. So which means it's a dinner, it's no longer a langar. Guruji defined langar, Guruji defined chai prasad ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਿਆ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਵਾਦਾਰ's duty to reach the ਸੰਗਤ wherever they are sitting ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ that is yours ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਲੰਗਰ ਦੀ that is yours ਜਿੰਨੀ ਆ ਗਈ that is yours ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ So we need to understand that if Sangat listens, fine. If they don't listen, well, it is one journey. We can do nothing about it. Let them do their journey the way they want to do it. So my understanding about Shabads, my understanding about Shabads, and I no longer use the word blessed Shabads because Shabads are all blessed. But Guruji's Shabads are prescribed Shabads. जो उन्होंने as our doctor, as our spiritual doctor, जो उन्होंने prescribe किते साढ़े वास्ते उसी चाहो तो उन्होंने listen करो नहीं चाहते थे ना सुनो मर्जी है ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ choice is yours. So these are very small ifs and don'ts. जी अंकल If you start the journey and then you begin कि यार ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਏ 2007 ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਅਟਕ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 50 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਓਮ ਨਮः शिवाय ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ for millions of years people have been chanting this mantra ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਕੀ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹੀਓ ਚੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ why don't we say namah shivaya om words ਹੋਈਓ ਨੇ why do you say om namah shivaya है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम भूर्भुवः स्वः all these mantras you can rechange the rearrange the words no we don't do that because the mantra is meant to be like that mantra has a isht at one end the sadhak at the other end and the promoter the propagator of the mantra in the middle so we need to understand that but if you don't understand that doesn't matter you just follow that you don't need to put your hand in fire to understand कि fire जला देगी ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ we pray for the deliverance of the
ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ confused souls. ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਿੰਕੂ ਵਿਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਵਿਜੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੀ, बिल्कुल पानी हो गया। मैं मूर्खों के हमदास। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल अंकल पॉइंट आप घूम के इत्थे आंदा है कि you know there was a lady who came to Guruji and कदी Guruji first timers ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ। he asked me once ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ uncle। my answer to him was that I've come for your blessing and then he said ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। I said ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ why should I waste my time and energy in telling him what he already knows। so there was this lady who came and Guru ji asked her ਆਂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ। she said ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। he said ਅੱਛਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। I am very contented with that। so ਗੁਰੂ ਜੀ said very good। ਫਿਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇਰੀ। she said ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ smiled and our meeting was over with Guru ji। सत्संग उन्हें सुनिया, चाह प्रसाद, हलवा प्रसाद, लंगर खादा, घर चली गई। some time later she came to Guru ji again। गुरु जी ने अपनी कोल बिठाया ते she was served चाय प्रसाद। गुरु जी asked her आंटी एक प्रसाद, एक चाह प्रसाद होर ले लै। तो she said नहीं गुरु जी I am satisfied। नहीं आंटी एक होर ले लै। उन्हें एक होर ले लिया। and Guru ji said आंटी और चाह प्रसाद लेंगी। she said नहीं गुरु जी चल आ फिर मत्था टेक चढ़ना ते। उन्हें मत्था टेकिया ते बस उठो उठी नहीं। that was her end and this is what she asked for कि जब मेरा लास्ट श्वास आवे ते मैं मेरा सिर ਤੁਹਾਡੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। and she now this is a master। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਮਰੂਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। I am sure ਯਮਰਾਜ must have been there somewhere ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਯਮਰਾਜ ਕਿਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। so we must you know these are like lamp posts for us। they guide us, they tell us how we must conduct ourselves, how we can improve to reach that stage, that elevated stage ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਸੀਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ when you are in Guruji's hands, these hands will not let you fall। very right। You are in very competent hands, you are in very safe hands, you are in very pure and very powerful hands। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਥਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਅੰਕਲ ਲਾਸਟਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਨੂੰ ਕਰਾਓ ਜਰਾ ਅਗਵਤ ਪਲੀਜ਼। ਅੰਕਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। I am speaking with you, this is your and mine direct connection। when a guru
is there who doesn't have a physical body today. He's there in his astral body, in his spiritual body. He has left his vachans. And Guru फोटो ना समझो मेरा स्वरूप है मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ So if you have any doubt, you seek the clarification from the Guru's Swarup. He will answer you, or he will arrange a medium to answer your queries. But when you start searching for answers right, left, and center, then you are inviting yourself to be misguided, misinformed. Because not everybody is enlightened enough. Not everybody has traveled on the road of sadhana. Guruji, everything boils down to one thing, sadhana. Sadhana, the inward path. ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੇ ਹੈਗੀ whatever you require to survive is available to you free of cost. But ਜਦ ਰੱਬ ਨੇ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ That is where the shlok comes in Guru Gobind dono khade kiske lagu paye and jad Guru te Rab dono ne aseem kripa karni ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਸੋਹਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਯੂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ then you come to that realization that you and I, God and I are one. You are the ocean, I am a drop. But I am your drop, so I am part of the ocean. Correct. And this will come only when you follow his vachans, when you traverse the path that he has ordained for us, that he has asked you to travel. ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ भाई जो होएगा तो देखा जाएगा ना जिन्हें तानू रास्ता दिखाया है वो संभालेगा God will never send you on a path which leads to destruction. He will be there. He is always there with you. अंग संग रहंदे ने गुरु जी बिल्कुल ते ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ never objected to experiments but he objected to criticism of experiments. He objected to people using the satsang platform as a source of entertainment. If you have a query, if you have a spiritual query, you are having serious doubts about your spiritual progress, Guruji is always there to answer you. He will be very happy to answer you. Very right, uncle. So, Guru Sangat ne haal ho gaya, uncle. ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿਲਵਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਲਵਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਲਵਾਣਾ ਕਹਿਲਵਾਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ ਮੂਰਖੋਂ ਕੇ ਹਮਦਾਸ I'll be requesting Seema Gill aunty please आप सेशन को कंक्लूड कराएं Jai Guruji uncle, thank you to Guruji, शुक्राना गुरुजी आपके थ्रू हमें बहुत नॉलेज इम्पार्ट हुई है बहुत कुछ सीखने को मिला है I really loved what you said about the ocean and the drop. It truly sums everything up when you walk down Guruji's path. We just have to trust him, we have to follow him. Yes, it's very fulfilling. Questions asked. And you get grace in abundance always, eternally. Till the time you merge in him, you will continue to benefit from his abundance of grace. So he is a loving master. You just need to love him, adore him, follow him with all your heart, with all your mind. Give the rest to him. Thank you, Uncle. I really appreciate all your input and granting us a new vision as well, a broader vision, I should say, because we're not reinventing the wheel here. We're definitely not doing that.
we're following Guruji's path, but just to broaden the perspective and to really understand more about what happened and what was imbibed into you during your journey when Guruji Maharaj was in his chola. So शुक्राना महाराज का कि वो आज आपके थ्रू हमें बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत गाइडेंस उन्होंने दी है. So शुक्राना का महाराज का. And शुक्राना for the platform, for Multilingual Podcast, Uncle Vasan Uncle. Thank you so much, because it really brings to light a lot of things that perhaps the Sangat are debating with or not understanding. So thank you so much. Jai Guruji. जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल. शुक्राना गुरुजी महाराज. आंटी, शुक्राना तो हमेशा गुरुजी महाराज का ही है. हम तो बस Jai सेवकों Guruji. के कुछ भी नहीं है. जो जैसा कृपा महाराज की है हम सब पर बनी रहे, और बस हम सबकी आंखें खुलें. ये जो पॉडकास्ट का जो पर्पस है सिर्फ वही है कि जो संगत अभी, हम खुद अंधेरे में हैं, हम सब अंधेरे में हैं, तो हम सब अच्छे रास्ते पे चलें. जो बार बार कुछ कहा जा रहा है तो उसका मतलब कुछ मीनिंग है इसका, तो संगत को चाहिए कि वो इसको समझें. खाली पंप शो करने से बात नहीं बनेगी. हमको गुरु जी की बातों को फॉलो करना है. जो गुरु जी ने प्रिस्क्राइब शब्द बोले हैं वो हम सबको सुनने चाहिए. दैट इज एडवाइजेबल. बाकी ये किसी ने ठीक ही कहा है कि डिस्कशन करने से गुरुजी नहीं मिलते. बिल्कुल ठीक बात है. हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन जो गुरुजी ने कहा है वो हमको मानना तो है ना. ये क्वेश्चन मार्क संगत के ऊपर है कि वो संगत इसको किस रूप में लेती है. चॉइस इज आवर्स. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी.